still continues on As our Secretary General. as the Secretary General. On our record, Mr. Umar Ayub was never brought on. Election Commission का? तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गया. My lord, because the list of party bearers is filed with us, and we need to know who is there. लॉ के तहत, My lord, किस लॉ के तहत? my lord, लॉ की बात है. under the Election Act, they have. हाँ, इलेक्शन एक्ट के जरा रेलेवेंट प्रोविजंस बताएं हमें, क्योंकि we've seen their constitution, we want to see now the law. Yes, my lord. If your lordship may see, the first provision in this respect is 200. Your lordship see chapter 11, political parties. And then this is how 201, how the political party is constituted. A political party shall formulate. वो ना पढ़े, relevant बात बताएं. जी सर. सर B में आप देखें organizational structure of the party at the federal, provincial and local levels, whichever is. कौन सा सेक्शन में पढ़ रहे हैं आप? 200. My lord, 201. सेक्शन 200. 200 या 201? 201 sir. 200 is just who will be a political party. 201 is shall constitute, formulate is, so it's a requirement of the law. A political party shall formulate its constitution by whatever name called, which shall include the aims and objectives of the political party. B, organizational structure of the political party at the federal, provincial and local levels. Then membership fees, designation and tenure of the office bearers of the political party. Criteria for receipt and collection of funds for the political party. And F, my lord, procedure for 1, election of office bearers. 2, power and function of office bearers, including financial. वो subsection 3 है मेरे ख्याल में. My lord, any change in the constitution of a political party shall be communicated to the commission within 15 days of incorporation of the change, and the commission shall maintain updated records of the constitutions of all the political parties. Constitution, are we here referring to the constitution of the body or Yes. constitution document? My lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. तो ये है 2013. Yes. तो हमारा सवाल था क्या, क्यों बताएं आपको? तो 201 ये लाजिम करता है उनको कि बताएं आपको. Yes, ma'am. 3. And then 202, how the political parties are enlisted. And then if your lordship may proceed. तो ये आपसे राब्ता पॉलिटिकल पार्टीज का मुतवातिर होना चाहिए. Sir, ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आप इनके लिए तो नहीं कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कर रहे that's true for every political party. हैं. नहीं, आपने ये तो नहीं किया इम्तियाजी सलूक इनके साथ. No, sir, no, not at all. We have required this of every political party. Then your lordship will see section 206. This is the selection for elective offices. Then 207, functioning of a political party. And that requires them to convene a general meeting every year. It requires that they shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels. Then your lordship will see 208. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. Any member of a political, then who can participate, my lord? Any member of a political party, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political मेंबरशिप party की office. डिटेल्स भी आपको देना होती है या नहीं? Sir, office bearers की details देते हैं ये. मेंबरशिप की जरूरत नहीं है. Initially देते हैं. Right, when the party is enlisted, at the time of its enlistment, they provide, because the requirement is that they should be at least have 2,000 members before it can be enlisted as a political party by the election commission. और 209 क्या कहता है? 200 सर, अगर 208 एक बार और देख लें सर. A member of a political party shall, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any party office. Subsection 3. आपका बुनियादी तौर पे ये केस है 208(2) का, Yes. कि आपने अपने मेंबरान को ये मौका नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके. And in respect of Mr. Umar Ayub, your lordship may see also subsection 4, the political party shall publish the updated list of its central office bearers and executive committee members by whatever name called on its website, and send the list
and any subsequent change in it to the commission. ये वो तो चले एक टेक्निकल चीज है ना, दो बातें हो गई ना। एक होती बुनियादी हकूक। जी सर। बुनियादी हकूक आइन में भी दर्ज है, आर्टिकल 17 में भी, इलेक्शन का हक। अब एक टेक्निकल चीज है कि उन्होंने नाम भेजा नहीं भेजा, चलें भाई उसको तो आप नजरअंदाज करना चाहें या ना करना चाहें मुझे नहीं पता, मगर एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, और ये बुनियादी हक हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का भी है कि वो वोट का हक इस्तेमाल कर पाए और लड़ सके इलेक्शन किसी ऑफिस के लिए। नहीं तो फिर अगर हम ये हक छीन लें तो फिर तो डिक्टेटरशिप नेशनल लेवल पे भी हो जाएगी और निजी लेवल पे भी हो जाएगी, जी मेरी मर्जी मैं जो करूं। And that is why, my lord, in section 209, the requirement. ये सब पॉलिटिकल पार्टी से आप बराबर का शुरू कर रहे हैं ना? Yes, my lord. There is. In my instructions are that. मगर इतना माइन्यूटली, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी आप रिकॉर्ड इसी तरह देख रहे हैं इतना माइन्यूटली? Yes, my lord. सर, ये अभी वहाँ भी अनअपोज आते हैं या वहाँ आपने? My lord, and we have delisted today. अनअपोज जो आ ये अभी हमने एक डीलिस्टेड का केस अभी जी देखा सर, था। हम अभी मगर एक बात जो up to today में शायद जाती है कि आपने ये इशू उठाया था जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी, My lord. तो ये एक मेरे ख्याल में एक वजनी बात है। My lord. ये नहीं कि एकदम से हुकूमत से गए तो आप इनके पीछे पड़ गए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे आई डोंट नो, मे बी My lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar for various violations. Even today, 13 political parties have been delisted. And one and the earlier part of the day. चलें खैर उसकी बात ना करें, कल को हमारे सामने होंगे। जी सर, तो जी वो मगर ये बस हम देखना चाहते हैं कि भाई आपका ये कोई पिक एंड चूज वाला एटीट्यूड ना हो। भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर, या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते। जरा चेक कर लीजिएगा कल। चलें आप देख लें। The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215 My lord. एलिजिबिलिटी। Yes, my lord. Anything notwithstanding. ये आपको भेजा उन्होंने सर्टिफिकेशन? My lord, they did. वो किधर है, किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. ये 440 या 441 पे देंगे। My lord, if your lordship may 89 या graciously 90 पे है please. ये। 440। This is, my lord, Page 90. page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. एक सेकंड। This is in part 2. एक सेकंड। नहीं, ये जो इनका फॉर्म है ना, ये फॉर्म दोबारा 65, बताइए। My lord, this is सर्टिफिकेशन फॉर्म 65 page जो है, 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है। जी सर। तो आप पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1, पेज 66। ये सर्टिफिकेशन, हाँ, ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं, यही फॉर्म। जी जी जी, ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है, which is रूल्स there in कहाँ the है rules. हाँ, ये वाले फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म। जी सर, this is under rule 158(1). 168 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। My lord, yes. Form 65, certificate regarding intra-party elections.
I such and such office. नहीं इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना पेज 68 पे Page 68, 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the Constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017, declared invalid. The names, designations, and address of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial, and local levels, wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant ये किधर है for all of party offices. ये किधर है Yeah, to sir, because नहीं इन्होंने लिखा है they have said they are unopposed, so therefore. जी यही तो ये कैसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड ये कैसे कह रहे हैं ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने डॉक्टर Nothing, because all the certificates. क्योंकि देखिए एक जगह तो आपने पढ़ा था कि अनअपोज आए जी सर। इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं वोट्स कास्ट हुए और नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है कुछ that is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before थ्री का जवाब किधर है Roman 3 का सर जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है वो पेज 78 पे है, अगर आप देखिए 8. So under the ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज वोट्स के नीचे अनअपोज तो लिखा है. बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन PTI, अनअपोज. This list रोमन goes- 3 है वो कहता है और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना कि आपको 10 वोट मिले उसको 100 वोट मिले जो भी होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कंटेस्टेंट फॉर ऑल ऑफ पार्टी ऑफिसेस. तो ये पेज 79 पे भी देखिए जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज. ये तो इलेक्शन के बाद आए ना, जी तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था वो कब अपॉइंट हुए थे? सर देयर वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स. नहीं ये देखे ना इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना पेज 79 पे. जी सर. उमर अयूब खान डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल वोट्स अनअपोज. जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of December. योर लॉर्डशिप इज राइट. उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की. जी सर. मुझे एक और खत दिखाया था आपने वो दिखाइए जी कि आई रिजाइन तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ ये गौर साहब जी की सर, सिग्नेचर के बाद 86 पे तो नहीं. आपने अभी दिखाया था मैं कहीं तो उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड में, इसलिए ये सवाल आपसे आपने अभी हमें बताया था वो एक जी, खत जी. था. I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 नहीं. Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना ये है 28 नवंबर 2023 का. नहीं, ये इन्होंने अपने मतलब ये तो पहले का है जी सर. इलेक्शन से पहले का तो ये कब बने कैसे बने ये नहीं पता आपको. Sir, he was never. Your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं जी, चूंकि this election. और अगर वो पार्टी छोड़ गए या नहीं है तो कोई तरीकेकार होना चाहिए किसी और को अपॉइंट करने का जो इलेक्शन होना चाहिए. Yes, sir. And according to the law, तो पहले उनका इलेक्शन होगा फिर वो इलेक्शन फेडरल इलेक्शन क्या होता है फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और 6 और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जो बॉडी को बनाएगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे. Yes, वो चलेगा ना yes, मामला. yes, my lord. Because what your lordship have from page 78 to 87. ये सवाल तो इनके लिए हम पूछेंगे इनसे. आप कह रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने. अब That is हम this- ये सवाल पूछेंगे कि किया या नहीं किया वो सुन भी रहे हैं. ठीक है. और आपका कोई अगला पॉइंट. So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there, that your और lordship. एक और बात जो है जी. आपने कहा ये हमने अज खुद नहीं किया, अज खुद भी आपने किया था और इनके अपने कंप्लेंट्स भी आए. जी सर. इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह की सर. हमें भी तो इलेक्शन लड़ने दो सर. बेशक हार जाएं. अच्छा
मुख्तुम साहब, ये इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए उनका तो हाउ इज दैट पब्लिसाइज्ड? हाउ वुड एवरीबडी कम टू नो के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके? व्हाट्सएप फैसिलिटी तो सबको अवेलेबल नहीं है। That is correct. पब्लिक नोटिस हुई है, कोई अखबार में क्या कोई कानून में कोई शिक है या इनके अपने रूल्स में कोई शिक है? The law only provides that they should be held in a fair and transparent कॉन्स्टिट्यूशन में manner. कुछ है? Constitution may, I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says they should be in a fair and transparent manner where persons should be given a right to participate, and that's there in 208 which we, and 209, not 209, 208 which we just read out to you, Roger. अच्छा, कोई स्पेसिफिक शिक नहीं है रूल्स में इनके? आपको अखबार में नोटिस देना है या क्या करना No, my है? lord, that's not there. Conducted in accordance with their. कि अपने रूल्स Because they have to conduct it, my lord, in आपके accordance. रूल्स में, आपके इलेक्शन रूल्स में कुछ ऐसी बात है? इलेक्शन रूल्स के अलावा इनके अपने रूल्स भी लगे हुए हैं जी, वो, हाँ, इनके अपने रूल्स हैं, वो देखिए, अभी नजर पड़ी थी मेरी that कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, देखे ना इनके। जी जी सर, बिल्कुल लगे हुए हैं। But our submission is that these rules were to be made by the Election Commission itself for its purposes. It couldn't change the party constitution. They couldn't, under these rules, bring in someone who was not entitled to come in through the party constitution. Rules? Provision कहाँ है? Constitution में. अब्दुल साहब, अगर इन केस इन द मिडल कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस तरह इस पार्टी के साथ हुआ, इन द मिडल इनके सेक्रेटरी जनरल चले गए उमर असद साहब, इंप्रेशन ये मिल रहा था एज इफ ही हैज लेफ्ट द पार्टी पोजीशन, नॉट द पार्टी। तो ऐसे के लिए कोई है इनके रूल्स या एक्ट में इनके कुछ ऐसा है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकती है? The Constitution, your ladyship, deals under section 512 on page 141 with the election of office bearers, and then कैसे आता है? Party which my lord Mr. Muhammad Ali Mazhar was referring to, they, my lord, are framed by the Election Commission under Article 9, paragraph F.1 at page 192. हाँ, उसमें देखें इनके रूल्स के अंदर कोई तरीका दिया है पब्लिसाइज करने का? No, your lordship, because they develop their bylaws, internal working in accordance with the constitution and notify the Where is the document of rule? मुझे वो बता देना, वो मिल नहीं रहा, वो इसमें है, इसमें rules sir, page 99. They begin with 98 and the yeah. They're not part of the ये तो 99 ये है ना इलेक्शन रूल्स इनके 98 के ऊपर हैं। ये आप देखिए, your lordship will notice two things immediately. These have been brought forward by them now. They are not a part of their constitution, and the election commission, they were not submitted to the election commission. उसमें कुछ फर्क आ गया है? Sir, yes. Because the statute says the election has to be held in accordance with the constitution, not in the bylaws. Because your lordship, इसमें देखें ये अगर ये इलेक्शन रूल्स 2020 हैं ये तो Sir. these are PTI own rules. my lord, इसमें इन्होंने कहा है कि वेन्यू को हम अनाउंस भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि लिबर्टी टू चूज वन वेन्यू फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शन My lord. और सेपरेट कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी एंड अदर अरेंजमेंट्स Yes, एज sir. माइट बी रेलेवेंट Yes, द वेन्यू में बी नोटिफाइड सेपरेटली Yes. और एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम। तो ये जो वेन्यू की बात हो रही थी अभी इससे पहले वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। नॉमिनेशन के लिए रूल 6 में है, एनी वेरीफाइड वोटर में
propose or seconded the name of any candidate as chairman. These are so illegible copies. Chairman, on Form 1, Nomination form may be filed by the candidate, by his proposer and seconder before the returning officer. ये है इसके अंदर rules 20 के अंदर. any verified voter may propose or second the name of any candidate. नहीं तो ये आप कह रहे हैं कोई नया मंशूर इनका बना है? No, my lord, what happens is that आप कह रहे हैं मैं मानता नहीं हूं मगर कोई नया मंशूर है? no, I'm saying, my lord, the constitution is the constitution of 2019. The law requires that the elections should take place in accordance with the constitution. वो तो हम समझ गए, मगर फिर आपने अभी कुछ जिक्र किया कि इनने कोई नया मंशूर इनका मौकिफ है. These rules of 2020 are framed by the Election Commission for its own internal working. That is there on page 192 of your lordship's file. They specifically say 192. Under the heading functions after number 6. 192 Page 192 part 1, my lord. वो तो फेडरल इलेक्शन कमीशन. जी सर, उसका अगर आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है. sir, if your lordship looks at the middle, bylaws को बता रहा है. These are not the rules. Bylaws for sir, यही है. Sorry, I missed the point. Sir, the rules which are here or the bylaws which are here. नहीं, जरा एक सेकंड, जरा आप वजाहत कर दीजिए. आप जब रूल्स बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? No, my lord. No, PTI के own. PTI rules. पीटर आप ये वजाहत कीजिए ना जरा. My lord. जी. So the federal under the heading functions F. Your lordship will see F.1. The Federal Election Commission shall develop the bylaws for its internal working in accordance with the Constitution and notify the same on the website. तो आइन इनका वही है. आइन वही है, आइन नहीं बदल सकते. अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए क्यों नहीं बदल सकते हैं? कोई बदलना चाहे कुछ, बदल. मतलब then they have to amend it in accordance with the procedure Amendment file करनी पड़ेगी आपके पास. and then they have to file. What turns on this point of yours? My lord, that these rules as such will not trump the constitution. Which rules are these? These the rules framed by the Election Commission of PTI. Where are those? Those are at page 98 onwards in part 1. So this probably will be their defense. I take it. This may be the they rely on Rule 28. This, I presume, will be their defense, correct? My lord, yes, and it says, your lordship may see, this probably What comes in the way of fair and free elections with these rules? What is so offensive about them? My lord- that you don't like them? My lord, I'd like to point out to your lordship Rule 28. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify ad hoc Election Commission to propose to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. So ये इसकी तारीख क्या है इनके रूल्स की? 2020 is this date. they simply say 2020. We don't know the date, my lord. नहीं, but even if we read this, how does it change anything? My lord, They are not relying on these rules because this is regarding ad hoc. They don't say I'm an ad hoc commissioner. They're saying I'm a full-fledged commissioner. In the ECP, they relied on 28. Sir, Should notify ad hoc election commission. So this is not their case of ad hoc. I make this submission because before the ECP, they relied on this Rule 28 to say, I don't understand. to say that the fallback position is that you could regard him as an ad hoc. दोबारा पढ़िए जरा इस तरह से. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify ad hoc Election Commission to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. तो पहली बात तो वैकेंसी होना है. अगर हम इसको मान भी लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग. दूसरी बात है सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, मगर फिर भी वन मैन शो तो नहीं होगा. फिर भी मेंबर्स तो होंगे ना. फिर भी And they have, and as many members as may be necessary. yes my lord. तो वो कह सकते हैं जी चलिए हमारे पास 6 नहीं है, 4 कर लेते हैं.
For instance, I don't know. There are two submissions over here, my lord. One, that even this Rule 28 does not envisage a one-man commission. The second submission is that under Chapter 9 on page 192, the requirement of the Constitution is that such members are to be co-opted by the Commission itself. That's one. And secondly, that insofar as the Chief Election Commissioner is concerned, he can't be co-opted. He has to go back to the electoral process. So they are resting the case on Rule 28 or some other one? Before the Commission, they rested on Rule 28, and the Commission, therefore, in its order says... No, no. Anything else which may save them, help them, which you are opposed to? My lord, your lordship may see page 61, part of the Election Commission's order. No, just tell us. We don't want to see Yes, it. my lord, there they rely on it, and Really, let's be fair. Is there anything here which will help them? my lord, our submission is no. Our submission I'm is asking as counsel, not as No, representing ECP. my submission as counsel is that the rules, insofar as they are inconsistent with the वो तो Constitution, हम समझ गए point Sir, को ना. and But this- let's say they are proper rules. And if- How will if- it even- how will it help them? Please tell us those provisions. our submission is that even if they are, then under Rule 28 itself, the body has to be an election commission. It can't be one person. So they have to explain to ये you. मगर वो दूसरी बात आप ये एडॉक नहीं कह रहे हैं कि मैं एडॉक हूँ. That's the third one. हो सकता है कि जैसे हमारे कलीग ने पूछा कि भाई कभी कभी हो जाता है कुछ फॉर वेरियस रीजंस इमरजेंसी ये वो वगैरह कोई बीमार हो गया कुछ हो गया तो वो एडॉक चले उन्हें अपॉइंट कर दिया मगर यहाँ वो एडॉक का केस ही नहीं है तो आप उनका केस क्यों प्लीड कर No, रहे हैं? I am only pointing out that in paragraph 16 of its order, the Election Commission notes that they admitted. I don't think it's a relevant point. No, they said the Election Commission noted that they admitted that this was in violation of the Chale, have you Constitution. concluded? My lord, I may draw your lordship's attention to a few paragraphs of the Election Commission's order. I may not read it, your lordship. Before that, can you show us the order and the challenge again now? The High Court order, my lord? Ji. My lord, yes. That, the impugned order of the High Court is at page 28. The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein Yeah, but where do they say anything about the elections? above. I think the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution or they were not? They don't say anything, my lord, they simply... First you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that is a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not... Let's read it again, the whole order. We hold. Hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number as illegal without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election. No, it चलिए आपका order उड़ गया. जी. अब number 2 पढ़ें. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं. देखिए इस सब चीज का जहां तक मैं समझ चुका हूं
कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो वो करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुनियादी चीज है जमहूरियत। जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए। ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है, गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है। आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना, तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें। हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे। That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू। That are consequential reliefs, not the main relief. This is the exactly problem that we are facing. Yes. We do not know where their reasons will go. उन्होंने कहा reasons amplify कर सकते हैं, but this is a fundamental prayer which seems to be subject to saying it aloud, so they make a note of it and they address it. Where is that declaration? Because the prayers you will see kindly declare that the elections held on 2nd of December 2023 were in accordance with the constitution of the political party and in accordance with law and the whatever. Because they will amplify the reasons within the ambit of the short order. And then the next step will be and consequential relief, including accepting the requisite certification, issuing the symbol, doing 500 other things if they're required to be done. But those can follow, or even if they're not written, those can be implied. But the declaration can't be implied, or can it be implied? My Lord, there is no such declaration. And also, if your Lordship looks at the petition, they didn't even pray over there that the elections were held properly. Are you sure? There is no... petition kahan hai unki? My Lord, your Lordship will see page 49, which is the prayer clause. Please read them. My Lord, hold and declare that the impugned order is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof, set it aside forthwith. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of... IPE क्या होता है? My Lord, intra-party elections. एक second. It's, I don't know why people don't write the whole things, intra-party elections. On the basis of any objections, filed by any persons were quorum non judice, illegal and without lawful authority. ये दोबारा पढ़िए, I can't understand. Hold and declare. Declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of any objections filed by any persons were quorum non judice, illegal and without lawful authority. Why? I mean, anybody can go and complain. So I was just reading why. My Lord, because... I don't understand this prayer. Chale, next go to the C prayer. Yes. Find and declare that election symbol has been illegal and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners, including Article 17 and Article 25 of the Constitution. Direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by Section 209, paragraph 3, in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order, so on and so forth. they have not sought the declaration. They have not, my lord. The reason appears to be, if your lordship takes a look at page 40. Because if they get a declaration, they may have left out C, D, E. Yes. And I would say the implied praise, and you have to do that once the declaration has been given of free and fair or whatever elections they've held, or in compliance with their own constitution. You see in paragraph A, I think Yes. they will, Yes, my lord. obviously they will respond to Page 43. I will like to know their lawful response. authority. My lord, They have challenged the authority as well as the jurisdiction. Now they has to explain us whether That the is ECP the- can check the inter-party elections or not at this stage, and whether it was a voidable or that is the central point. negligible. I wanted to draw your lordship's attention to ground A. इसीलिए इधर वो ऑर्डर आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का लर्नेड सिंगल जज का,
उन्होंने ये बात की कि ये फ्रेज उस वक्त मैं दे सकता हूँ कि मैं जब स्ट्राइक डाउन कर दूं इलेक्शन एक्ट के कौन से दो सेक्शंस थे जी 209 and 215(5). वो उनकी वहां तक तो बात अब समझ आई मुझे जाकर के कि उन्होंने क्यों कहा। अब शायद समझ आ रही है बात को। चले आपकी बात हम मौके समझ गए, कोई और बात नहीं है तो हम आगे बढ़ें। But may I just show to your lordship ground A? That is the case they are setting up, and that's why they are not seeking the declaration of the election. According to them, ECP has no jurisdiction to challenge the internal appointments of officials of PTI or set aside PTI's intra-party election held on 2nd of December 2023 and declare them void. As such, the impugned order is not sustainable in law. ECP is not a court of law and cannot question the appointment made by any political party or examine the validity of a political party's intra-party election. But doesn't these prayers violate the constitution then? Our submission is yes. Because you are saying something, I'll do whatever I want to do. Yes. I mean, contrary to my own constitution, I don't know. I would want certainly assistance of Hamid Khan Sahab. And be prepared to be clean bold, Mr. Makhdoom Ali Khan. My lord, may I just, 2 lines from this page, ground B, last 2 lines, they talk about the role of the election commission. Only role is to keep a record of the party's constitution and changes, then keep record of elected officers, record sources of funds and campaign Now, can you finance. quickly go through the provisions of the election commission in the constitution of Pakistan? My lord- Start from there and proceed with the law. My lord, yes. Quickly. Yes, my lord. Your lordship may turn. I'm sure you're tired standing up, but My we lord, at least have the luxury of sitting down, but anyway. My lord, if your lordship may graciously take a look at articles 213 onwards is the election commission, but the relevant 230 or 230? 213, my lord, 213 on is are the provisions relating to election commission. The relevant one over here would be 218, subsection 3. No, Which but the whole, ये पूरा chapter elections पे, Ji sir. part 7. Yes, sir. And 218(3), it shall 213 and, हाँ. to 218, paragraph 3, it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and that corrupt. ये तो general elections की बात है. Then sir, Inter party election का जिक्र है इसमें कहीं? सर इसमें नहीं है, सिर्फ एक तरह से आता है 219, the commission shall be charged with the duty of, and if your lordship may turn to clause E, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. अब वो जो इलेक्शन एक्ट है उसको इन अच्छा, तो ये आ रहा है 219E के जरिए. E के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017. या तो उसको चैलेंज करें. Yes. अच्छा, एक तो ये हो गया. अब बुनियादी हकूक, इन्होंने 2 बुनियादी हकूक का तस्करा किया है अपनी प्रेयर में. एक है 17 और एक है 25. My lord, on Article 17. एक जरा सी बात सुन लीजिए ना. Sir. 17 कहता है कि हर शख्स को इलेक्शन में वोट डालने का हक होगा और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होगा. Sir. इस पे तो कोई आपकी कोई राय, मनफी राय तो नहीं है ना? नहीं सर. हाँ? No sir, not at all. अच्छा, फिर 25 क्या कहते हैं? सबको आप बराबर ट्रीट करेंगे. Sir, इस पे भी आपकी कोई? not at all. No. तो ये जो सिंबल वगैरह का जो जिक्र है ये सारा इलेक्शन एक्ट में आता है. My lord. सिंबल का जिक्र कहाँ आता है इलेक्शन एक्ट में? 12 of the Election सिंबल Act, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? Chapter 12 of the Election Act, rules मेरे पास भाई. इलेक्शन 212 के बाद ही है. जी सर. आइन में तो उसका तस्करा नहीं है ना? नहीं सर. जी. Sir, allocation of symbols is 214. The commission shall prescribe a list of election symbols for allocation to political parties, and candidates and the symbols in the list shall be visibly and perceptually different from each other. 215. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis Shura Parliament, provincial assemblies or local governments on submission of certificates and statements referred to in sections 202,
206, 209 and 210. If your lordship will see the next provision, a combination of enlisted political parties will get symbols. And then if your lordship will see 5, if a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. Is it your case that the only reason political parties will comply with any direction of the election commission to hold election is when you hold this stick in one hand? Otherwise, they'll say, we won't hold elections. Otherwise, or is there some other mechanism also? My lord, there is a mechanism that if given the time frame in their own constitution, if they नहीं, वो तो आगे पीछे हो सकता है जैसे आपने अब वो वाली बहस तो हमारे सामने नहीं है आपने साल दे दिया उनको उस टाइम फ्रेम पे भी हम उनको सिर्फ फाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो छोटा सा फाइन है वो दे के आगे बढ़ जाएंगे बट इफ वी वांट टू एनफोर्स आर्टिकल 208 elections within a political party and 209 then the elections should be in accordance with the constitution of a political party. If we don't have the power under 215(5) then these provisions will be purely advisory in nature. There will be no obligation on political party to comply with it because this election मुझे याद आ रहा है वो धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की थी पता नहीं उन्होंने कहा था कॉस्मेटिक है फिर उन्हें अपोलोजाइज किया कि लॉ इज नॉट कॉस्मेटिक आई डोंट नो व्हाट प्रोविजन देयर इज देयर वाज समथिंग मेंशन्ड देयर व्हिच टुक ग्रेट एक्सेप्शन टू दैट हाउ कैन यू talk about the law cosmetic you are bound by the law which gives you the powers also and that's part of your lordship's judgment and we'll place that judgment on the record that this is what your lordship that's not relevant to this case so is it my lord it's relevant to this case and there are a number of other determinations by this honorable decisions by this honorable court where this honorable court has said that the election commission is a body which has been created to ensure that elections are held in a fair manner. No, not the general elections. Inter-political party वाले. My lord, intra-party पर भी judgment. वो वाले judgment दीजिए. साहब वैसे इसमें और भी कोई judgment है जिसमें ये the question of inter-party elections were made subject matter of any judgment. My lord, your lordship must see this. In which violation was treated so grave. My lord, if your lordship see where the observations are, this is PLD 212 Supreme Court. PLD 212 Supreme Court 681. PLD ये आपकी बुकलेट में है? जी सर, टैब 8. ये वाली बुकलेट. ये आफ्ताब अहमद खान शेरपॉप केस आप कह रहे हैं ये कौन सा? My lord. नंबर कौन सा होता है? My lord, टैब 8. Tab 1. Tab 8. Okay. 8 means workers party. Yes, my lord. ये क्या फरमाता है? Irrelevant. My lord, paragraph 42, I'll read 40 later, but 42, the parliament has framed different laws to effectuate the above constitutional provisions and to regulate elections to the national and provincial assemblies. ROPA reiterates and further vests the election. In material terms, is a vast difference between ROPA and the present election act. My These lord, provisions. कोई खास फर्क है वही है. My lord, some of these provisions are new, but otherwise it's Only 215(5) is new, otherwise all the rest. all the rest are the same, my lord, except for 5, subsection 5 of 215. But your lordship. No, has it been, was there in ROPA also 215(5)? No, in ROPA there was no 215(5). 215(5) has not been challenged. No, my lord. ठीक. My lord, regulate and check intra-part, your lordship will see further vest the election commission with the responsibilities and powers to inter alia regulate and check intra-party affairs and actions taken by candidates and parties in anticipation of and on election day, resolve all election disputes, declare the election void, so on and so forth.
The last three lines, the law therefore entrusts the Election Commission with exclusive, broad and extensive powers to attend to all issues related directly and ancillary to the election process. ठीक, next case. Sir, I need to ask you. My lord, yes, my lord, your lordship's judgment in the suo motu case number 7 of 2017, PLD 2019. दूसरी booklet Supreme में Court, my lord, it's in volume 1, tab 9. इसमें क्या आपने कहा? Sir, on page 343 of tab 9, paragraph 33, the Election Commission is a constitutional body and the Constitution stipulates that the Election Commission shall ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. The Election Commission is also required to undertake such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. Article 17(3) of the Constitution requires political parties to account for the source of their funds, and Section 211 of the Election Act demands that detail of election expenses be provided. The Election Commission confirmed that TLP did not account for its fund and election expenses, but surprisingly professes its helplessness because the law according to it is cosmetic in nature. And so this is what I recalled. The Election Commission should disabuse itself that constitutional and legal provisions are cosmetic. The responsibilities placed on the Election Commission by the Constitution and the law must be fulfilled. They are not optional. इसमें तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं है। नहीं, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं, but there's a provision which आपके पास कुछ चल भी तो रहा था ना मैटर, हम अखबारों में पढ़ते थे क्या एक्सपेंसेस वाला केस, उसका क्या बना? What do they फंडिंग या क्या? They found violation. they found a violation, my lord. हाँ? They found a violation. नहीं, वो उसका बना क्या ना, हतमी नतीजा क्या बना उसका? Chelsea वाले का जो contribution वाला केस में हमने finding देखी. वो किधर है वो सर वो उनको पता होगा वो। उसमें सर हमने रिपोर्ट दी थी। नहीं, ये ने क्या हतमी फैसला क्या हुआ उसमें? फैसला रिपोर्ट नहीं पूछ रहे। The commission found out that there were funds that were received from sources prohibited under law, बनना and a क्या? show cause notice issued, उसका final फैसला नहीं आया show cause का to my knowledge जी। That is still pending। फैसला नहीं आएगा क्या मतलब? जी कानून की रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले इलेक्शन कमीशन ये तयन करेगा कि क्या आया प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए हैं, अगर आए हैं तो शो कॉज करेगा। कमीशन ने शो कॉज कर दिया, उसमें फिर शो कॉज प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है, उससे कोलैटरल लिटिगेशन होती रही। और आई अंडरस्टैंड ये तो कब से चल रहा है? जी 2014 से। उसमें सर ये अभी एक सिंगल बेंच का फैसला था सर विद योर परमिशन, और उन्होंने कहा कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करें, which we have challenged that we have already undertaken the exercise and we need not to further record evidence. There is a judgment of a single bench of the Honorable Islamabad High Court. We have challenged that through ICA. 9 साल हो गए अभी तक नहीं हो रहा है। There are multiple litigations. Our orders are challenged one after another, and there are. चले जी, and please proceed. My lord, this is How long will you take? I hope shortly. my lord, very short. PLD 2018, Supreme Court 189. This is 2018. Supreme Court 189. This is at tab 7 of this volume 1, which your lordship was just reading. Page is 238. Relevant page is page 238. Your lordships on page 238 notice clause E of Article 219 of the Constitution, and the last 4 words on this page. The ECP is an independent and autonomous body which exercises executive and regulatory powers derived from the Constitution. Though it has the power to appoint election tribunals and so on and so forth, my lord, the ECP itself is a supervisory body which exercises regulatory and administrative powers under the Constitution and the law. Chief. Then next paragraph, my lord, the 5th line,
Your Lordships, we have highlighted that for your Lordships as well. Besides being a limb of the executive that is charged with the duty to conduct and oversee elections in the country, we find that the ECP must necessarily possess the power to collect facts, information and data that enable it to properly and effectively perform such duty. Such a capability represents the constitutional and inherent legal power of ECP. Therefore, in exercise of its powers under Article 6 of the PPO read with Rule 6, the ECP has all the necessary authority to ask for and collect the requisite information and facts that enable it to decide and determine whether the contributions or donations accepted by a political party are prohibited under Article 6(3). Without such power, we are of the opinion that the ECP's power to decide as to whether a political party is receiving contributions or donations from sources prohibited under Article 6(3) EBIT would for all. Which party was this? My lord, it was the case of PTI. This was a case. ये judgment तो ये 18 का है, अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है? Sir, not as yet. Right? Such a result would be against the clear command of Article 17(3). Are you disregarding a judgment of the Supreme No, Court? my lord, we are not. We have then proceeded accordingly. वो proceedings नहीं है. That those proceedings have taken place, which my learned friend Mr. Ahmed Hassan was informing your lordship about. The show cause proceedings are still pending. My complaint to the commission that the funds were being फैक्ट्स पे नहीं जाए ना, अभी तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है ECB को कि काम करो इसका, तो क्यों नहीं किया? ये तो 2018 का जजमेंट है. for the reason stated कि जी collateral litigation है, there is no other reason to my mind. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. जी बिल्कुल सही बात. चलिए अगला बताइए. Paragraph 47, we find it hard to fathom the contention that the intention behind the PPO and the rules is to take away the administrative and regulatory power of the ECP derived from the Constitution to call for any record, information or data from a political party to ascertain the sources of its contributions and donations and to place such power exclusively in the hands of a party appointed chartered accountant. Learned Counsel has not been able to show us from any provision of the PPO and the rules framed thereunder, nor from any other principle of law laid down by this court, that failure by the ECP to object the audited statement of account of a political party before its gazette publication would tantamount to the acceptance of the said accounts, and that thereafter the ECP would become functus official. आगे बढ़े, अगला My lord, 48 also I just refer, that has been highlighted. My lord, the next judgment is at tab 13, that's a PLD 2018, Islamabad 300. That's a judgment of a learned Sikh judge. We have highlighted the relevant portions. यही तीन आप कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, या कोई और भी है? These are cases, 35 cases which ECP filed CPs. जी वो कहें जी किधर गया? My lord, may I just submit that to conclude on this proposition, our respectful submission is that the duty of the ECP to declare that a political party is ineligible for an election symbol when it fails to hold intra-party elections in accordance with its constitution is actually made redundant by the judgment of the Peshawar High Court, and so also are sections 209 read with section 215(5). Because if we do not have that power, then it has far-reaching consequences. We cease to be a body which can have any control over intra-party elections. बस My lord, this was the submission on this. There are couple of. ये आपका राइट ऑफ रिप्लाई भी होगा ना? जी सर. अब आप हमें भी जरा. May I just point out one thing that recently. आप कोई और बात बताएं? My lord, the preliminary objection that they have taken, I can. देखिए हम आपको जो आप अभी तक आपसे बात समझ आई है वो सारी बात घूमती है इनकी अपनी इलेक्शन के बारे में, ठीक है? ये इन्होंने केस जरा कहीं और ले गए, बट बुनियादी बात जो आपका एतराज था इनका, और यह एतराज आज से नहीं, मतलब जब ये हुकूमत में भी थे कि भाई आप इलेक्शन तो करा लें अपनी पार्टी के, तो उन्होंने कहा जी हाँ देर हो गई वगैरह वगैरह, हमें साल दे दें, आपने साल दे दिया. फिर आपका कहना ये कि आपने जो इलेक्शन कराए सही नहीं है. ये बुनियादी सी बात है. अगर वो इलेक्शन सही है तो मेरे हिसाब से मे बी सब्जेक्ट टू करेक्शन
बाकी रिलीफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो। फिर सर्टिफिकेशन आप लाजिम है, आप पे इनका इंतखाबी निशान देना लाजिम है आप पे, वो तो मेरे ख्याल में ऐसी चलेंगी। और अगर ये नहीं दिखा सके कि इलेक्शन उन्होंने सही तौर पे किया है तो शायद इनको फिर कॉन्सिक्वेंस सफर करेंगे। अब दो तीन कानूनी बातें भी खड़ी हो गई हैं। एक बुनियादी कानूनी बात है, खान साहब आप ये नोट कर लें, एक बुनियादी कानूनी बात है कि डिक्लेरेशन इन्हें नहीं मांगा कि भाई जो हमने इलेक्शन कराया है बिल्कुल सही है। वो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे चले गए। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को उर्दू में क्या फरमाएंगे? नताइज और अमामिल। ठीक है, तो वो ज्यादा फोकस उधर चला गया है, वो बेसिक बात खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी हमने अच्छा एक बात हम वजाहत कर लें, अभी मालूम किया था कि जो ये 2 पिटिशंस थी, ये अभी मजीद मालूम हुआ है कि वो आज लगी थी और आज उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब ने तारीख ली है दोनों में। ये आज की पोजीशन है। तो जब एक मसला वहां खड़ा हुआ है तो वही मसला पिशार जा सकता है या नहीं जा सकता है। My lord, और तीसरी बात जो आई है वो इसको नजरअंदाज कर दें कि अगर ये पिटिशन ना भी थी, पिशार हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन था, इस पे आपने हमें कोई बात नहीं मदद की है। सर मे आई वेरी क्विकली माय लॉर्ड सबमिट का कहना है क्योंकि हमने इलेक्शन इधर करा है इसलिए पिशार हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। ये इसको सेक्शन 20 CPC जो है ना, द कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अराइज, My lord, basically that has been interpreted in so many judgments of the Supreme Court with regard to Article 199 and territorial jurisdiction. उस पे भी आप अपना, क्योंकि वो आपने रेस किया है तो Sir, the direct judgment on the point and observation of this honorable court is in the case of Lieutenant General Salahuddin Tirmizi versus Election Commission of Pakistan, where first the Is it in the books? My lord, it's there. It's tab 6 in volume 1. And the relevant observation is at page 760. PLD 2008 Supreme Court 735. Page 760. I have highlighted the portion, my lord, but I'll read it. 760. Was there some previous cases also? Yes. In the present case, Election Commission, while discharging functions in connection with the affairs of Federation within the territorial jurisdiction of Islamabad High Court, passed an order in respect of NA20 Mansehra, a constituency of province of NWFP. Therefore, the objection relating to the jurisdiction and maintainability of writ petition before the Islamabad High Court would be of no significance. It may be pointed out that in the light of principle laid down by this court regarding the exercise of such jurisdiction in such situations, the order passed by the ECP, which functions at Islamabad in respect of the constituency of province of NWFP, would be challengeable both before Islamabad High Court and Peshawar High Court. This concurrent jurisdiction is, however, subject to the rule of propriety, according to which a High Court having jurisdiction in a matter, if it has exercised such jurisdiction, the other High Court which has also jurisdiction in the matter may restrain from exercising its jurisdiction. In view thereof, in the present case, propriety demanded that subsequent order passed by Election Commission of Pakistan should have been challenged before the Islamabad High Court, and the jurisdiction of Peshawar High Court should not have been invoked. पुराने वाले ब्लॉग है, संदल बाग है। जी सर, they are all there. This I point out because this is directly an election commission case where it was first challenged. The first order was challenged in Islamabad. The second order was challenged in Peshawar High Court. The Supreme Court They have also said that the concurrent jurisdiction for the both courts. They've said there is concurrent jurisdiction with both courts, but propriety is that if you have gone to a court once in the case of the first order, then for the second order you should also go to that court. In concurrent jurisdiction, because the order was passed for the constituency of KPK, therefore they held that the concurrent jurisdiction. Yes, my lord. But what do you say in this case where the order has been passed at Islamabad and the elections and But this order is for the whole of Pakistan. This order is for the whole of Pakistan. It can be challenged. Now, देखिए उनके elections. Suppose you found that the elections of a political party, to the extent
of the federal offices of Punjab, Baluchistan were all right, but only the Khyber Pakhtunkhwa, these persons who came said कि जी हमारे यहाँ सही नहीं हुआ. So that would of course give maybe Peshawar High Court. You are not saying that because the Election Commission of Pakistan is based in Islamabad, the primary jurisdiction is Islamabad. That's you're not saying. No, ma'am, I am not saying that. What I am saying is that when I passed the first order invalidating their election, Where did you pass that order? 23rd, 11th. Where? My lord, that order was in passed in Peshawar or Islamabad. here? No, both orders were passed in Islamabad. Both orders were passed in Islamabad. First time round, when the order is passed on 23rd of November, they go and they challenge it before the Lahore High Court. Second time, Those elections were held in Lahore. no. नहीं वो जो पीटीआई के इलेक्शन वो जो 2022 वाले थे वो कहाँ हुए थे? जो अंडू हो गए बाद में. Islamabad, he says. According to ECP's instructions, they were in Islamabad. First election. Yes, according to ECP. My lord, the second time round, when the election commission, देखिए अब हमारा एक और भी ऑर्डर पास हुआ है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, वो पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवा दिए. अपनी टेरिटरी तक तो आप ऑर्डर करें, मगर पूरे पाकिस्तान में आई डोंट नो उसकी कोई रेलेवेंस होगी या नहीं. वो मैटर पेंडिंग है अभी या नहीं पेंडिंग है? my lord, that matter is pending. That is your lordship's order in वो बहुत जल्दी में लिखा गया ऑन आई थिंक द डे आई वाज लीविंग. That's the 16th of order. December को लिखा है ना? 15 दिसंबर का order है I sir. was leaving on 16th early morning. It's in CPL civil petition number 4365 of 2023. उसकी रेलेवेंस कोई है इसके? My lord, the relevance is from the point of view to show to your lordship in terms of the preliminary objection, but may I come to that in a minute as I come to that preliminary objection. On this issue of propriety, this honorable court has said, if you have challenged the order of an constitutional body in one high court, then when that constitutional We body understood that point. passes, the second order go to the same high court. My lord, the second submission is, That order will in rem or in personam? my lord, that order, according to your lordship's jurisprudence, is an order in personam. But if your lordship takes a look at then this of Mr. Justice Jawad Hassan's judgment in the Lahore High Court, where he says this petition is not maintainable unless you challenge the provisions of 215 paragraph 5. Now, my lord, if that is done, if the vires of a petition is challenged, then a notice to the Attorney General. There is very common phenomenon of this aspect of the case. Sometimes one levy imposed by FBR that is declared illegal by Sindh High Court, but the said levy is affirmed by the Lahore High Court. Even in the case of Semini, Yes. there is a distinction of the judgments. My lord. One High Court has declared it ultra vires, and while the Sindh High Court has declared it intra vires. My lord. So in both situations, the judgments are pending and appeals are pending in this court to reconcile. My lord, yes. So this is also an aspect of the case that what is to be done if the one High Court declares this and second High Court declares this. My lord, And there is a law, is a federal piece of legislation. I point out. If I may just think aloud, those importers, they may be importers in Lahore, they may be importers in Karachi. So they have to show some nexus. I mean, if the importer is based in Lahore and the port of entry is Karachi, I don't think Baluchistan High Court will have jurisdiction. Right, my lord. ठीक है? Yes, my lord. So probably you have to show some nexus with that territory. Why Yes. you're going to this and not going, and you're not shopping for what is the word? That Forum shopping. Forum shopping. So maybe there is this thing, but I don't think we need to go No, into my that lord. detail. Also, I want to make it clear that we will not consider, because nobody's raised this point, the vires or otherwise of section 215, 215.5 or any other provision, because that's not under challenge. Yes, my lord. And Because Lahore High Court has made observations that this can only be done if they are challenged, but has not given a view on the matter that they are in accordance with the constitution or not. So that is for another day. yes, my lord.
Yes, my lord, because if that was the case, I would say in particular. Don't say it. All right. But Say it when that day comes. generally an issue of No. Let's conclude. not virus, Ji. but generally if there's an issue with regard to the interpretation of the constitution, even then under order 27A नहीं of वो the- बात तो अब तो बदल गया, अब तो 5 मेंबर बेंच बनना होगी ना, अब तो वो आईनी उस पे हो जाएगा ना इंटरप्रिटेशन No, पे। I'm saying in the High Court, my lord. हाँ वो 27A की वो तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर मैं ये रिलीफ उस वक्त दे सकता हूँ जब ये चैलेंज हो, और ये चैलेंज नहीं हुआ है तो उसको वो तो ठीक है, सर। नोटिस देते कि जब वो चैलेंज होता। But even the Peshawar High Court आपने judgment, ये पॉइंट लिया है, वहाँ भी नोटिस नहीं किया आप कहते हैं। no notice to the Attorney General by the Peshawar High Court. What? No notice. The Federation was not a party. दिखाएं जरा ऑर्डर दोबारा। Sir, Page 28. page 28, पेज 28 This is one of your grounds in the petition. in the petition. I must compliment my brother. He's read the I didn't get opportunity to read it. इसमें पहले बताएं पार्टीज किधर हैं? Sir, Page the parties are there. on which page? Petition का है, sorry. Petition, my lord, is at page 28. Page 30 page पर है। 30 to 53. If your lordship may. I want to see the array of Yes, my parties. lord. They are there on page 31. ECP is the Page respondent number Election one. Commission of Pakistan. Pakistan, and then they're all, these are the private complainants, my lord, the PTI complainants, and that's it. Pro forma respondent. No federation, no. Former respondents हो गए। And then your What is lordship the will see, point? they go all the What is the way, point involved? they go all the way to 15. नहीं तो you are on notice. My lord, Election Commission is a party. Election Commission is a party. My submission is that if a question arises with regard to the interpretation of the Constitution under Order 27A of the CPC, a notice to the Attorney General is mandatory in view of the. No, but if we agree with you, then we can't hear this case. Then it will be a 5-member bench. No, my lord, my submission is नहीं, this. ये आप सिंपल कह सकते हैं कि नोटिस देना चाहिए थी जी। 27 की, बस बात खत्म। बस यही बात अगर आप मजीद बात करेंगे नहीं, मजीद नहीं कर रहा। वो फिर आ जाएगा सेक्शन 4 है या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। जी सर, then it will 5 require. member bench, चलिए। not less than 5 members. यानी वो आप काबिल वकील आपके नहीं थे उधर। So there, I hope you're not saying that the council representing the Election Commission of Pakistan before the Peshawar High Court was not a Qabil. no, the Election Commission Please don't say this. The Election Commission of Pakistan was very competently represented. I'm just pointing it out. My lord, the other. Charlie, that was just a side note. My lord, Mind us saying so. Ji, other issue khatam. is that a number of respondents were not even served. Respondents number 3, 4, 5, 9 and 11 were not served. Private respondents को सुना या नहीं सुना? The complainants before you. Some were heard, but the following number 3, 4, 5, 9 and 11 were not even served. नहीं, इनके तब वो- वकील तो थे, देखें 2 and 7 के भी थे, 8 के भी थे, 10 ये के तो भी बहुत थे, 12 के technical भी बात है। जी थे सर। और 13 के भी थे। अब वो कोई सर्विस अवॉइड कर रहा है, इलेक्शन ही खत्म हो जाए। 3, 4, 5, 9, 11 के नहीं थे, but नहीं, that's. वो बात मेरे ख्याल में ज्यादा इलेक्शन मैटर्स में जरा लचक रखना चाहिए। All अगर हम सबके सर्विस को जान से अवॉइड करेगा कि इलेक्शन गुजर जाए फिर मैं सर्विस करूंगा। My lord, the last submission relates to the technical objection raised. My lord, when your lordship goes back all the way up to the case of Javed Hashmi, your lordship will see it is reported as PLD 1989 Supreme Court. PLD 1989 89 Supreme Court, page 396. This is just to show your lordship the title of the parties. ये आपकी बुकलेट में नहीं है ना? Sir, ये बुकलेट booklet में नहीं है, sir. जी, इसमें क्या Because this दिखाना was a चाह रहे हैं? preliminary objection raised. Now your lordship may just look at the title of the parties. This is a 5-member bench. Election Commission of Pakistan was the petitioner. तो आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं। That is the submission, my lord. How do you distinguish those two cases My lord, that learned senior counsel has cited? my lord, in neither of those cases relate to the Election Commission. To start with, I would also seek your lordship's leave to place on record a list of 35 cases where your lordships are dealing with appeals filed by Election Commission. And your lordship may already also consider one point. Please give a list to Mr. Khan Saab. Khan Saab को भी दीजिए।
जी And you're not- पेंटिंग तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं सर, फिर भी आ सकता है। disposed of की list. And your lordship may also see your lordship's judgment on 22nd. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिसाइडेड। जी सर, 2nd of January. Disposed of, I don't know what it means, it could be dismissed for non-prosecution. सर ये डिसाइडेड थे, ये अभी जो मोस्ट रीसेंट है ये 2 जनवरी 2024 का है बाय दिस वेरी बेंच। ये देखिए बुनियादी सी बात है, आई डोंट नो इफ यू कैन बी सूड सो कैन यू सू। आई मीन ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना, यू कैन बी सूड, सफर द कॉन्सिक्वेंसेज and you can't even appeal. And the I don't know, it's not, the second doesn't sound fair. The second submission would be या तो कहेंगे you can't be sued, फिर तो वो उनको मसला खड़ा हो जाएगा, you can't file a writ against ECB. My lord, the reason why I pointed out federation and all that was that when your lordship looked at the array of parties on page 31, the only official party is the election commission. If I cannot sue, then a judgment which will relate to कमीशन जावेद हाशमी के केस में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जजमेंट जो रिट पिटीशन में फाइल हुआ। जी सर। रिट पिटीशन में My lord, and it stands to reason, because in this case, if your lordship examines page 31, I am the only official respondent who is there. If I can't challenge it, then there can be no challenge, and the Peshawar High Court judgment will have finality, and your lordships will have no power under 185. Now, we could probably carve out an exception, which I don't think would be applicable, would be if an allegation of a personal nature is made against a particular member or members of the Election Commission of Pakistan, that you as Election Commission cannot challenge it, that particular member, suppose the writ of quo warranto, but you can't hold office. So naturally it doesn't affect the Election Commission of Pakistan, and that member may challenge it, but not the Election Commission. But I mean, I don't know, does it not stand to reason if you can be sued, so Yes, can you ma'am. sue? That is our submission. That is our submission, and the And the two cited judgments were dealing with statutory bodies. yes. So I don't know how persuasive they are. This is- Anyways, we keep our mind open. This is an electoral body which makes all these decisions in Got it. Anything else? That's all. चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है। फ्रेश? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे। देखें, हमारे आपको बार बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं। आप कल सब नहीं लोग चाह रहे भी हैं? ज्वाइन कर ले ना, कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो नहीं, इलेक्शन। बिल्कुल बात तो वहीं पर है। हम साहब कल का आपका क्या कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे जनाब नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे हैं, जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे। इसे जो टाइम नहीं, आप बताएंगे। इन द मॉर्निंग आवर्स बताएं। आप जल्दी नहीं, आप बताएंगे। आप इतनी कम कदर करते हैं सीनियर बुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें। अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे नहीं सर, आज आगे बढ़ा दें। लेट इट बी 9:30 then as usual. आप ठीक है, कुछ आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस? You want to make it 10? Actually, some instructions. ये 10 बजे कर लें। We will also put in some thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to. Would you want? Have you आप been, have you been provided with these writing books? में लेके Have you आएंगे been बना के? provided with these books? हामिद मिल साहब गई हैं आपको? जी जो इन्होंने पेश कुछ ये केस लॉ की बुक्स हैं, दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट। आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने तो बनाने चलिए 10 बजे रख लेते हैं, हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म करने वन वे और द अदर। ठीक है सर। वी आर इन योर हैंड्स,
whatever you want, we will accommodate you to the extent of time. Very kind of you, very kind. My lord, may I? ये ना समझें कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे जी। मगर आपके कोई अच्छा हाँ एक बात है कोई मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा, मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं दो चार सकता हूं, अगर आप पॉइंट्स 2-4 मिनट्स में आप कर दें फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए मैं बिल्कुल इजाजत दे तो जल्दी जल्दी कर जी दें। बिल्कुल। पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम आप कॉन्शियस उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं जी पहले करता हूँ। मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है जी आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 जी 10 अकबर एस बाबर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने you जो heard in Peshawar or not? नो जी वी वर नॉट सर्व नोटिस एंड आई कुड नॉट आपको पता नहीं चला अखबार वगैरह में पहुंच जाते what I learnt was that a notice will be issued but it was not issued then if I have to go by बगैर public नोटिस क्या notice पहुंच जाते मैं आज भी तो हमने नोटिस तो नहीं किया है ना जी। खान साहब देखें अब ये कितने चुस्त हैं पहुंच गए जी जी तो आप भी थोड़ी चुस्ती दिखा देते अपनी जातियत तक मैं इधर था नहीं, वरना मैं जरूर पहुंच जाता, क्लाइंट नहीं पहुंचा उसको चले notice खैर इस पे कुछ ज्यादा वजन नहीं है इस बात में जी, गुजारिश है आपको देखिए एक बात होती है एक चीज रिपोर्ट हो रही है मीडिया में सब में जी, जी। अगर आप वाकई थे आप पहुंच जाते चले उस बात को छोड़े आगे जी, बढ़िए मैं सिर्फ फैक्चुअल गुजारिश चलिए, करना आगे बाकी है। बढ़िए, आगे बढ़िए। मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो चंद आइन की शिक है खासतौर पे 17(2) वो पढ़ना चाहता हूँ। शीट तो देखे सुन लेंगे, आपका जो अपना स्टेटस है ना वो बताइए, स्टिल यू आर ए मेंबर और नॉट? जी आई एम अ मेंबर, आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर, आई हैव नॉट बीन removed from membership, no show cause ever noticed, never resigned I have not resigned, I have not joined another party ever। वही रिमूव ठीक है ना, जी रिमूव ये फैक्ट है जी। और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी है ठीक है वो तो सुन लिया अब आप मैं सिर्फ election गुजारिश लड़ना करना चाह रहे सॉरी माय लॉर्ड। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, आपको जी मैं पहली तारीख को जो G8 का दफ्तर है, मरकजी दफ्तर, वहां गया, अपने साथ काफी 10-20 लोग लेकर गया, नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गया, कागजात जमा कराने की जो भी तफासील थी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया। मुझे कोई कागज या नॉमिनेशन पेपर या कोई रिक्वायरमेंट, कोई रूल प्रोसीजर नहीं दिया गया। मगर वो आपके हाथ है कोई नॉमिनेशन पेपर की शक्ल हमें नहीं दिखाई जी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया, बल्कि नहीं आपको नहीं दिया गया मगर वो क्या लगता शक्ल उसकी कैसी है? मैंने जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसमें भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी। अगर नॉमिनेशन का कोई फॉर्मेट था, पेपर था, मैंने नहीं देखा जी। इसमें अगला पॉइंट, और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी तो आप कह रहे शिकायत है, नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट जी, एग्जिस्ट? कुछ नहीं। अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 किसी और को देखेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म मिला? मेरे इल्म में नहीं है जी। अच्छा हाँ बताइए। तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़े तौर पर लिखा कि ऑन नवंबर 30 प्रेस रिलीज वाज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ PTI कोर कमेटी स्टेटिंग that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy press release attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and ये किसको rejection। आप लिख रहे हैं? जी ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ। इलेक्शन की डेट आपको पता थी? जी वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को, कॉपी आपने भेजी उनको PTI को? जी उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन। प्रेस रिलीज कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस जी रिलीज ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं। लगी हुई है प्रेस रिलीज? प्रेस रिलीज सर आई विल हैव टू चेक, अगर नहीं हो तो दिखा दीजिएगा। इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस? जी 30 नवंबर को हुई थी। अच्छा और नेक्स्ट पॉइंट, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि 17 आर्टिकल 17 जो है उसमें 2 पहलू हैं। एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलिवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर। एवरी सिटीजन not being in the service of Pakistan shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, but the second one is more important to me, or be a member of a political party। तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है। मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, था, आज भी हूं। मैंने आज तक
कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो केस साइट भी हुआ फॉरवर्ड फंडिंग का, वो भी उस काविश का एक नतीजा था। सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। अच्छा, ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ। वो कल ले आइएगा। जी मैं जी और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू वो भी देख लीजिएगा। मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल मैं सर। दूसरा, मैं सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है, उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी, आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 It shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary. अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं? जी, आइन का। हाँ, तो उन्होंने पढ़ा जी, वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को, उस पोर्शन को, मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है, और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल, उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं जी, है? पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटिशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में का है। Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have. ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप दिखाइए कि आप उसके, वो क्या उसको कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी मैं अगला पॉइंट, मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी, आइन के सब एफ में, आर्टिकल 222 एफ जी, आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 2 हाउसेज, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहां पर रुकना चाहता हूं कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है, और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए, तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी, और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द कमीशन। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है, और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था? WP 6। वो मालूमात कर लें जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया है तो वो मंगवा लीजिए, और नहीं आया तो कब तक आ रहा है ये भी पूछ लीजिएगा। जी सो ये वो इजाफी आईनी शिक है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आगे बढ़िए। अब मैं सर इलेक्शन एक्ट पे आना चाहता हूं। जी आ जाए। इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के हवाले से सेक्शन 15 एक नई शिक है जिसमें कंप्लेंट्स की प्रोविजन, सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 कंप्लेंट्स। जी कंप्लेंट्स, ये पहले रोपा में नहीं था। ये 15 ये कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय। हो गई बात, अगली बात। जी इसके बाद सर जो सेक्शंस है, मैं 200 की तरफ आता हूं।
200 में मैं 200 सब सेक्शन 4 की तरफ निशानदेही करना चाहता हूं कि notwithstanding anything contained in subsection 1 a political party shall not, और इसका सब ए जो है propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the fundamental principles enshrined in the constitution. So मेरा जो proposition है for consideration of the court वो ये है कि ये fundamental प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और मुस्तकिल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में बने ताकि जो हाउसेज हैं वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो सकें, जो अवाम की प्रॉपर नुमाइंदगी कर सकें। जी, इसके अलावा सर जो आई विल समराइज माय प्रोपोजिशन के कॉन्सिक्वेंसेज इंट्रा पार्टी इलेक्शन होल्ड ना करने के 3 हैं जो इन्विजिड हैं इलेक्शन एक्ट में। पहला सेक्शन 2025 में है जिसका एनलिस्टमेंट से ताल्लुक है। किससे? एनलिस्टमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। Registration? जी, रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट। What is the word used in the एनलिस्टमेंट। enlistment? ये मैं गुजारिश करूं। Enlistment. जी, एनलिस्टमेंट। इसमें यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एनलिस्टमेंट के लिए आती है तो सेक्शन 202 ये कहता है कि आपने कुछ डिक्लेरेशंस या कोई सर्टिफिकेशंस देनी है, उसमें भी 209 का जिक्र है। तो अगर एक पार्टी जो 209 किसका? आइन का? इलेक्शंस एक्ट जिसमें सर्टिफिकेशन है कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, कहने की गुजारिश ये है कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती ही नहीं है तो वो तो एनलिस्ट होने की भी एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कहा इन्होंने कराया। मैं आपको नहीं ये कह रहे हैं हमने कराया, अब कोई कंटेस्ट ना करे, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाएंगे उसको कंटेस्ट। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये गुजारिश, क्या इलेक्शन खत्म हो जाता है इस बात पे? जी मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये कह रहा हूं कि 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं विज़ावी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ये है कि पार्टी की एनलिस्टमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है जिसका जिक्र हुआ कि अगर सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जाता तो फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 2085 में है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इनएलिजिबिलिटी ऑफ अ सिंबल। तीसरा कौन सा सेक्शन है? जी वो सेक्शन है 2154 4 and 5। 2115 सब सेक्शन 4 and 5। सो गुजारिश ये कि फोकस जो है पार्टी का वो तीसरे वाली कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा रहा। सिंबल नहीं मिला तो नुकसान आपको भी नहीं होगा? यहाँ भी तो मेंबर है ना पीटीआई के। फाउंडिंग मेंबर है आप, फाउंडिंग मेंबर। I am guilty of following the law and do not worry about the consequences. Anything, we are just asking a question. मेरी जात पे नहीं जी, मुझे तो फायदा होगा अगर पार्टी मुस्तहकम होगी। आप असूलों पे लड़ना चाहते हैं? जी, I am guilty of following the law। अगर उसका कोई नुकसान है तो ठीक है, हम सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाएंगे। जो फोकस रहा है आर्ग्यूमेंट का जो बज़ाहिर लग रहा है वो थर्ड कॉन्सिक्वेंस पे है। सो फुल पर्सपेक्टिव ये है कि इससे अखज़ ये किया जाता है कि यकीन में मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, ये सब बातें चली गई हैं सिंबल पे। जी जी, वो तो अगर इलेक्शन सही हो गया तो सब कुछ मिलना चाहिए, वो कॉन्सिक्वेंस है मेरे हिसाब से। अब सुनेंगे खान साहब को कल क्या कहते हैं। बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस बीइंग नियर, तो मेरे ख्याल में सिंबल का फोकस है, बट कानून की मंशा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजिम है। कानून की बुनियादी मंशा है कि इलेक्शन कराओ जी, साफ शफाफ कराओ, फिर बाद में चीजें मिलती जाएंगी या नहीं मिलेंगी तुम्हें, वो तो एक तरह से सजा या जजा या सजा वाली बात आ गई ना। जी बिल्कुल। अब इट इज नॉट फॉर मी, कंप्लायंस वाली बात अलग है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा शिकवा जाती तौर पर एज ए कंप्लेनेंट ये है कि मुझे मौका नहीं फराहम किया गया जिसकी वाज़ेह निशानदेही 2 सेक्शन 208 सब 2 में भी की गई, जो हवाला दे दिया गया। मैं उसको रिपीट नहीं करता कि हर मेंबर को ये इख्तियार है कि उसको इक्वल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई बात। सो ये वो अजाफी प्रोविजंस हैं। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। तो ये आपकी जो कब से शुरू हो गई है? 2014 नवंबर से जी। उस वक्त क्या हो गया था 2014? उस वक्त पार्टी में फंड्स का मामला था सर। मेरा ख्याल था कि गैर कानून उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज है, फॉरेन फंडिंग तो एक जर्नलिस्टिक टर्म बन गई, लेकिन कानूनी मंशा ये थी कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे नहीं आने चाहिए। और प्रोहिबिटेड सोर्सेज क्या थी? वो ये थी कि मां सवाए इंडिविजुअल सिटीजन्स के और कोई पैसे पार्टी में नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। तो मेरा ये कहना था कि
citizens of Pakistan, wherever they may be, can contribute to the political party. But who is not a citizen or somebody who is a corporate body, even a local company for that matter, cannot contribute to the funds. So मेरी तो complaint उस नौयत की थी कि शफाफियत आए. Companies cannot contribute. The law said it could not. Which section? This was section 5 and 3 of the PPO, and this is also now in sections. खैर ये इसमें इशू नहीं है, But it was a specific provision है जी कि चलिए ठीक है. source क्या होना point चाहिए. So मेरा इस मामले में अभी यही गुजारिश है कि जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ. एक आपको चुपता हुआ सवाल पूछ सकते हैं? आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से. अच्छा. और इसमें आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ. आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली. यस. 2014 में जब मैंने कंप्लेन की थी, उस वक्त जो भी मामलात मुहर्रकात थे, मेरी काबिज जारी रही. आई फॉट सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट the mindset that respectfully prevailed at the election commission, the mindset that was reflecting the government of that time and the powers that be. So I have stated. किसकी हुकूमत थी? जी हुकूमत तो एक है जो हर वक्त रहती है और एक हुकूमत है जो बदलती रहती है. तो मैं तो रेगुलेटरी स्ट्रगल और सियासी स्ट्रगल और प्रिंसिपल स्ट्रगल को परसिस्टेंटली विद सीरियस माइंडनेस परस्यू करता रहा हूं और अभी भी करता रहूंगा. जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में. Done? I have nothing further to add. ठीक है. But आपको डॉक्यूमेंट लिया जी मैं इंशाल्लाह. ठीक है. फिर कल इंशाल्लाह 10 बजे. खान साहब ठीक है 10 बजे. वो इलेक्शन कमीशन वाले भी ले आए होंगे ना फाइल. आपने बोला था फाइल. वो फाइल आप ले आए इलेक्शन कमीशन की फाइल, ओरिजिनल फाइल. वो हमें जरा छोड़ दीजिएगा. ओरिजिनल फाइल लाए हैं इस मैटर की? नहीं, राइट का क्या मतलब, लाए हैं या नहीं लाए? नहीं, हाँ छोड़िए, नहीं ले जाइए, गुम भी हो सकती है. कल ले आइएगा अगर लाए नहीं है. ठीक है. अगर कोई चीज देखना चाहे हमें साहब तो वो देख लेंगे. तो अगर हाँ ओरिजिनल फाइल जो भी इस मामले की है, वो लाहौर वाली, पेशावर वाली, इलेक्शन वाली, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है. 10 o'clock इसमें हाँ ऑर्डर लिख देते हैं आज का शॉर्टर से. हाँ ओके. कल का बेंच भी निकलवाएं, इशू कर दें. हाँ इसमें लिखें this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order. किधर क्या order? Page. Order किस page पे है? हाँ, assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court, Peshawar, whereby it set aside the decision कहेंगे या judgment कहेंगे, the order of the Election Commission of Pakistan within bracket ECP dated 22 December 2023 and full stop, and issued certain directions. The Election Commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the elections, general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Full stop. Accordingly, we proceeded to hear the matter. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat
अच्छा, वो अली जफर साहब हमसे बात करना चाह रहे थे उधर से, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, नहीं सुबह होंगे मेरे तो वो बेशक फॉग के बाद पहुंचे, कम से कम आपको सुन लें, तो वो अगर कोई भी एड्रेस करना चाहे तो इन पर्सन आके कर ले। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, खाली सिंपल नोटिस। अच्छा, इधर कौन अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी चौधरी साहब तो बैठे हुए थे, हैं वो होंगे, वो 27 की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, आप इसमें पार्टी तो नहीं है, मगर अगर कोई सवाल उठ गया तो हम शायद पूछ लें आपसे। हाँ ओके, 27 की जरूरत नहीं है, वैसे डीएजी होता है ना, जाहिर है फेडरेशन और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जरूरत पड़ी हम आपसे पूछेंगे, मगर अभी मैटर तो लगता नहीं है आपसे कुछ पूछें। बाहर फिर भी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं अगर कोई आप करना चाहें। आप तो सुबह से बैठे थे, सुन रहे थे ना सब कुछ, ठीक है। तो आपका हम वीकेंड भी खराब करना चाहते हैं। उसकी फिक्र मेरी नहीं है। अच्छा, क्या लिखा and states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as partner to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected. क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक है। Anything else you want to note it? Anybody? चलिए, thank you everyone for spoiling our weekend. बुरा ना माने, ऐसा ना लाइट नोट। आइए, थैंक यू।